अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। तो आज की जो वीडियो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और सर्विस ट्रिब्यूनल का एक इंतहाई अहम फैसला इस वीडियो के थ्रू शेयर करने लगा हूँ। और एक ऐसा डिसीजन कि तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आइंदा वक्त में भी अगर किसी किस्म के इस तरह का वाक़या पेश आए किसी भी सरकारी मुलाजिम के साथ, तो ये जो रेफरेंस है सर्विस ट्रिब्यूनल का, ये सफिशेंट होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस या लेटेस्ट अपडेट आएँ वो आप तक पर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। इस चैनल के ऊपर हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जो कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वीडियोज़ की फॉर्म में आपके साथ फिल इन टाइम जो है शेयर की जाती है। तो अब मैं आपको सर्विस ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। जी, और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल की तरफ से ये फैसला है। मोहम्मद जहाजेब, विजुअली इम्पेयर्ड एक्स म्यूज़िक टीचर, ये ऊपर 54/2023 रेफरेंस किया हुआ है। और प्रेजेंट इसमें ये 14 जून 2023 की डेट है। मिस्टर अल्लाह नवाज खोसा एडवोकेट, काउंसल फॉर द एपिलेंट। नंबर 2 मलिक मोहम्मद कासिम DDA। नंबर 3 मिस्टर अदनान बशीर, litigation officer DR. Through this appeal filed under Section 4 of the Punjab Service Tribunals Act 1474, the appellant has assailed the voice of the orders dated 9/5/2022 and 28/10/2022 passed by the respondents. Precisely, the appellant, being a visually impaired person, was appointed as music teacher on contract basis in the year 2017 in Special Education Department, Punjab, and was posted at Government Secondary Special Education Centre, Rahim Yar Khan. His service were regularized in the year 2020. The disciplinary proceedings were initiated against him under PEDA Act 2006 on the charge of inappropriate touch, undesirable behavior, and harassment rendered towards female adult visually impaired student. A preliminary inquiry followed by the regular department inquiry was conducted into the aforesaid allegations so levelled against the appellant, and finally the competent authority by order dated 9/5/2022 imposed upon him the major penalty of dismissal from service. The departmental appeal filed by the appellant was rejected by order dated 28/10/2022, hence this appeal. Number 3. Learned counsel for the appellant maintained that the appellant has been made a scapegoat in the matter, that there were certain complaints against the in charge and other teacher of the center who made plan against the appellant, that though the appellant disclosed this fact in his डिटेल। मतलब है कि इसमें एक्चुअली मैं बताऊं कि ये टीचर था जो विजुअल इम्पेयर्ड था, उस पर एलिगेशन लगाई गई कि अडल्ट स्टूडेंट जो उसको उसने टच किया, इस तरह का बिहेव किया, जिसकी वजह से फिर ये जो है उसके खिलाफ दरख्वास्त की, उससे जॉब से डिसमिस किया गया। फिर उसने कहा कि ये पूरी एक प्लानिंग थी जो सेंटर का सरबराह और दूसरे लोग भी मिलकर कर रहे थे। तो मज़ीद आगे मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न रिप्लाई, बट द इंक्वायरी ऑफिसर डिड नॉट कंसिडर द सेम एंड दैट द अपीलेंट वाज आल्सो नॉट provided opportunity to cross-examine the witness examined during the inquiry. Learned counsel for the appellant on the strength of the East Law reported in 2022 PLC CS 474 maintained that the CCTV footage without any forensic test has no evidentiary value. With these submissions, learned counsel for the appellant for acceptance of the appeal. On the other hand, learned Deputy District Attorney opposed this appeal while supporting the
इम्प्यून अंडर, यानी फलाने की रिपोर्ट उसकी जो है वो नहीं थी और सीसीटीवी फुटेज तो थी। तो आर्गूमेंट हियर्ड एंड रिकॉर्ड परसूट द appellant has been proceeded under the provision of PDAC Act 2026 on the charge of the same unethical behavior with the female student. A regular was conducted in the matter, the report whereof has been proceeded by the department. The pursuit of inquiry report shows that the inquiry officer recorded the statement of 14 witnesses, including the students and teacher of the center, but surprisingly, the appellant was not provided an opportunity to cross-examine them. This situation made the whole proceeding defective. The inquiry officer has also referred the so-called confessional statement of the appellant that the pardon he, but it is a matter of fact that the appellant has taken a specific defense that all the propaganda started against him when he raised certain serious allegations against Mr. Irfan Ahmed, senior teacher working as temporary principal and master. The appellant took the same stance in his reply submitted during the inquiry as well as in his reply as the final show cause notice. In the said scenario, the statement of the appellant that the requested for the apology could not be considered as his confession even otherwise when guilt of the appellant was otherwise not established. His confessional statement would not be sufficient so far as the CCTV footage is concerned. In the absence of any forensic report to the authenticity of CCTV footage, the same cannot be considered as legal basis for proceeding against a person. Reliance placed upon 2021 SCMR 1077 and 2022 PLC CS 474. In a nutshell, the appellant has been fixed on the basis of a defective inquiry and insufficient evidence. The import order passed on this. मतलब यह है कि जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी जो है वो पेश नहीं की गई थी और जो एलिगेशन लगाए गए थे इम्पेयर्ड विजुअल इम्पेयर्ड टीचर के खिलाफ वो बेबुनियाद थे, क्योंकि जब तक वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं होगी सीसीटीवी फुटेज की तो किसी भी मुलाजम जो है उसको सर्विस से नहीं निकाला जा सकता है। एंड भी मैं आपको इसका दिखाता हूँ। व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये अपील लिखी हुई है मोहम्मद जाजेब, विजुअल इम्पेयर्ड सन ऑफ अब्दुल सत्तार, रेजिडेंट ऑफ मोहल्ला खोखरा, नवाकोट खानपुर, ex music teacher BS11 in secondary school special education center रहीम यार खान एपिलेंट है और वर्से इसका द सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब लाहौर, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन 31 शेर शाह ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन लाहौर। रिस्पोंडेंट्स एपिलेंट अगेंस्ट द ऑर्डर नंबर 16/18/69 एडमिन 2017 dated 9/5/2022 of the Director General Government of the Punjab Special Education Department 31 Sher Shah Block New Garden Town Lahore, whereby the appellant was awarded major punishment of dismissal from service and appellant order number Hello Appeal 110/2020 dated 28/10/2022, whereby the appeal of the appellant was rejected by the respondent number 1 claim in appeal. Very kindly set aside the impugned order number of the Director General Government of the Punjab Special Education Department, Sher Shah Block, New Garden Town, Lahore, and appellant order number passed by the Secretary Government of the Punjab Special Education Department after declaring the same to be illegal without jurisdiction, ab initio, void, arbitrary, discriminatory against law and facts, and very kindly order the reinstatement of the appellant in along with all बैक बेनिफिट्स एंड सच सर्विस। यानी ये तमाम जो फैसला किया गया था अपीलेंट जो जिसके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए थे कि इसकी वीडियो फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं थी, तो लिहाजा इस हवाले से मुलाजिम जो है जिसको डिसमिस किया गया इसको बहाल किया जाता है। तो सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले के मुताबिक किसी भी मुलाजिम के ख़िलाफ़ अगर वीडियो जो है बेबुनियाद हो और इल्ज़ाम लगाए जिसको सर्विस से निकाला नहीं जा सकता जब तक कि वीडियो जो है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट ना हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो है ये बात जो है जहन में रख लें और उसको सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले को जहन में रख लें कि कोई ऐसी अगर प्रोपेगेंडा करके वीडियो आपके खिलाफ बनाता है और इल्ज़ाम लगाता है, जब तक उसकी फोरेंसिक नहीं की जाएगी
तो उस वक्त तक को किसी भी मुलाजिम को सर्विस से नहीं निकाला जा सकता। इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।